Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of perimeter and area. This is 7th question of its exercise 11.2. So the question says that triangle ABC is right angled at A, AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 cm, BC is equal to 13 cm and AC is equal to 12 cm, find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. So हमें given है AB is equal to 5 cm, AC is equal to 12 cm and BC is equal to 13 cm. So हमें find out करना है area of triangle ABC. So area of triangle ABC is equal to half base into height. हो जाएगा हाफ. सो बेस हो जाएगा हमारे पास AB एंड हाइट हो जाएगी AC. सो वैल्यू पुट कर देंगे. AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 12. सो 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम. 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AD. सो हमें AD भी फाइंड आउट करना है. देन अगेन एरिया ऑफ triangle ABC is equal to half base into height. So हमने फाइंड आउट कर लिया है ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाफ. बेस हमें गिवन है 13 जो कि है BC एंड हाइट हमें AD फाइंड आउट करनी है. So by cross multiplication, AD is equal to 30 into 2 upon 13. So इसे solve करने पर आ जाएगा हमारे पास 4.6 centimeter. So area of triangle ABC is 30 centimeter square and length of AD is 4.6 centimeter. Thank you.